कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ. There should not be any disturbance midway. You see, Bloom's taxonomy we might have studied way back in 1980. मैंने 86, 87 में B.Ed करी थी. You might have done after that 94, 95, 97 में करी होगी. उसके बाद भी करी होगी. Then now the thing is कि we must know basically who is the father of this taxonomy. उस समय तो हम लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे कि यार इसको टैक्सोनॉमी बनाने की क्या जरूरत थी, खामा-खा के लिए एक पेपर हमारा बढ़ा दिया. But now the thing is that कि it is now we are realizing the novices जो नए नए अभी इस प्रोफेशन में आए हैं, टीचिंग प्रोफेशन में, they are just doing the same thing कि they are utilizing this technology. This is Bloom's taxonomy in making the question paper. हमारे टाइम से what we used to do is see how to make the question paper. Nothing. हम लोग जब पढ़ाते थे, not me, generally मेरे colleagues, क्योंकि वो अभी भी टीचर ही हैं या टीचर की तरह रिटायर हो गए, दो चार उसमें प्रिंसिपल बन गए हैं. It is by the fact that they slogged, they worked hard. Now the thing is, he was Benjamin Bloom, born in 1913 and died in 1999. इनके बारे में जो भी कुछ पढ़ना होगा आपको बाद में पढ़ लीजिएगा, ये पावर पॉइंट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. बेसिकली क्या है कि मैं इसको बहुत इजी बनाने के लिए इसमें सिर्फ 18 स्लाइड रखी हैं एंड इट शुड नॉट टेक मोर देन 25 to 30 मिनट्स. उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे. जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप लिख लीजिए एक पेपर पे, एंड व्हेनेवर वी कम अक्रॉस सच थिंग्स देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग. So this gives you an important framework to work upon, to focus upon high order thinking. अभी हम लोगों ने nearly 5 साल 10 साल 8 साल पहले देखा है कि the board paper also is based on 4 type of thinking. Low order thinking skill जिसमें thinking की जरूरत ही नहीं है. We just put on the across the questions. कैसे? When we are teaching the subject, then the students have opened their books. What we used to ask, underline this, underline this, underline. वो जो underline वाले sentences होते थे, they were 1 mark or half mark questions. Generally तो मैंने देखा 90% teachers back questions को थोड़ा सा वो twist करके और रख देते थे पेपर में. But now if you work hard a little bit, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है. You will be just working only for 1 week, putting it across just only 1 week, one subject you might be taking. अगर आप ज्यादा भी ले रहे हैं सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके और उसके ऊपर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दीजिए, and you will see within 1 week you will be master of making question paper. कोई आपको बोले कि सर वो आपके प्रिंसिपल ने आपको बोल दिया कि सर विद इन हाफ एन आवर आई नीड अ पेपर, एंट्रेंस टेस्ट चाहिए हमको एडमिशंस के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू यू विल बी वेरी लाफिंगली डूइंग इट. वहां पे बातें भी करते रहेंगे और पेन भी चलता रहेगा, क्वेश्चन पेपर बन गया. सो इट इज गोइंग टू गिव यू हेल्प और असिस्ट यू इन परफॉर्मिंग डिजाइनिंग योर टास्क. मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस रखने हैं, एडमिशन टेस्ट हो गया. 20 क्वेश्चन रखने हैं, मिडिल सेक्शन का हो गया. 50 क्वेश्चन रखने हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हो गया. So certainly this way it goes on. Number 2 is crafting questions. Crafting questions means not only designing, to work out the question paper out of the given, गिविंग आउट द आउटलाइन ऑफ, एक पैराग्राफ लिया आपने और उसमें से आपने क्वेश्चन पेपर बना लेना. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल.
Now the thing is, third thing is providing feedback. जब आप क्वेश्चन पेपर एक डिजाइन कर लेते हैं, then only you will be coming to realize, अरे how to do this, what is to be done this. Then certainly you will be coming to know that yes, then only you will be coming to know कि फीडबैक होता क्या है क्वेश्चन पेपर का. अभी हम करेंगे, देखिए एक एक लेवल करेंगे. We move on to the 6 levels of assignment. That is, assessment भी करना है, क्वेश्चन पेपर भी बनाना है, और क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, which means assessment. इसको याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छा सा तरीका लिख दिया है, के का से. के का से मीन्स के फॉर नॉलेज, का में से सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, then application, then analysis. K का. And the fifth level is synthesis. देखिए last level is evaluation. हर चीज का evaluation होता है, इसका भी evaluation होगा. Fourth और fifth level अगर आप देखें, certainly you will come to the analysis और synthesis का difference क्या होता है. Please put off your microphones. ये क्या है? इतना बोलने के बावजूद अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लोगों की बातें बच्चे कैसे समझते होंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. अब हम फर्स्ट लेवल पे चलते हैं. तो क्या है फर्स्ट लेवल? फर्स्ट लेवल इज नॉलेज. अब नॉलेज में मैं बताऊं आपको, इसको पढ़ने से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए. हम जनरली लोअर क्लासेस में एक स्टोरी टेलिंग का रखते हैं. जनरली हमारा सब्जेक्ट टीचिंग जो है, इट इज थ्रू स्टोरी टेलिंग. अब स्टोरी टेलिंग में क्या करते हैं हम लोग? हु वाज राम? हु वाज रावण? व्हाई इज होली सेलिब्रेटेड? व्हेन इज ओणम? विच कैरेक्टर? अब यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ओमिट, वेयर. These type of simple words, they give you the lowest level of learning, and that is why lowest level of testing. That is question paper में जो आपके आधे और एक नंबर के questions होते हैं, they are done on this basis. How does tsunami happen? List 3 uses of light. How would you show this formation of shadow? सीधे सिंपल से क्वेश्चन है. इसमें आपको you don't have to apply any knowledge. Knowledge means any fact, concept, nothing. These are only established things and you have to repeat. अब इसमें देखिए कैसे करते हैं assessment. Match character names with the pictures of the characters. एक स्टोरी करिए आपने, कार्टून स्ट्रिप दिखाई या स्टेटमेंट बनाया कैरेक्टर के साथ. हु सेड? हु सेड? जनरली हम लोग एक अभी पूछते हैं. मैं अभी आप लोगों से पूछूं, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? सीधी सिंपल बात, लाला लाजपत राय ने बोला था. एक पोस्टर आपने बना दीजिए, and who is the main character of this poster? Similarly, scramble story. There was a crow. Water was low. Throw the stones. Water come up. Crow was thirsty. ये sentence आपने haphazard way में दे दी. And now they are asked to arrange the story picture or story sentences in the sequential order. So they will remember this thing and fine, carry on.
Recall details about setting by creating a picture of where a part of the story looks. ये मीटिंग अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी. देखिए आप लोगों ने 41:11 कर दिया, 45 में हो गया. एनीवे आप इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक के साथ फिर दोबारा से. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन. इसमें छोटे से वर्ड्स आते हैं, कंपेयर, कंट्रास्ट, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, एक्सप्लेन. मैं दो चार लूंगा एग्जाम्पल तो हो जाएगा. हाउ वुड यू कंपेयर X with Y? What is the main idea of this story? What can you say about? How would you summarize? How would you summarize? एक कहानी बताइए आपने. Summarize this story. What is the meaning of verb? ये है comprehension. इसका assessment कहाँ आता है? एक सिनेरियो आपने सीन दे दी, पिक्चर दे दिया, and then ask them, interpret the picture of the scene from the story or the art print. एक art print आपने दिखाया, and then write down the story on this. Predict what could happen next in this story before reading entire book is completed. या हमने क्या करा कि एक उनको पिक्टोरियल टाइमलाइन दे दी. पिक्टोरियल टाइमलाइन यू अंडरस्टैंड. और फिर उसके बाद उनको बोला कि ऑन दिस बेसिस यू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी. नेक्स्ट इज का से के का मतलब एप्लीकेशन. नाउ अभी तक जो आपने पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ा है, नाउ दिस इज द टाइम टू अप्लाई. दिस इज द टाइम टू अप्लाई. अप्लाई, बिल्ड, चूज, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, ऑर्गेनाइज. How would you use a compass for the construction of a circle? What examples can you find to demonstrate evaporation? What elements would you use to change the state of a matter? Simple things. The child will be coming to know or coming to express himself. Yes, by heating, evaporation takes place. Without heating, evaporation कैसे होता है? When we keep these things in the sunlight, evaporation takes place. Sometimes there is no sunlight also. Even then also, because when the wind is blowing harder, then evaporation will take place. I'm sorry. Then evaporation will take place because the air, while passing through the cloth, will take the water elements or water droplets along with it, and the cloth will dry after some time. All right. Next is application. इसकी कैसी आती है? देखिए, classify the character as humans, animals or things. आपने एक pictorial दे दिया, एक picture दिखा दी उनको, and these are very simple things which you can do in day-to-day classroom setup. Give example of the people the student knows who have the same problem as the character in this story. एक story बताई और उसके बाद बच्चों से ही ये पूछा, give some example of the people that resemble with this particular character. Select a meal that one of the main characters would enjoy eating. Plan a menu, a method of serving it. Generally, मैंने देखा, I have also worked in one of the topmost Christian school of the world, not of India. I'm talking about the world. You might be knowing St. Paul's, Darjeeling. और वहां पे ये hobby होती थी कि there were the boys. That was totally a boys' school. All the boys were dedicating 1 hour per week for cooking only, so that they become independent when they are alone in their life. जब वो नौकरी पे जाए कहीं पे बाहर, तो उनको बाहर का उल्टा सीधा न खाने की जगह they cook themselves and then eat it. And then they used to innovate also. Brownies कैसे बनते हैं, cookies कैसे बनते हैं, and they all knew about it.
The next level is very easy. देखिए, एनालिसिस. एनालिसिस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? एनालिसिस इज ब्रेकिंग डाउन अ सब्सटेंस into different components and then finding out its characters or characteristics. Simplify this equation. Compare this with this. Can you list the parts of digestive system? This is analysis. पूरा digestive system है, starting from what you call mouth, and then throat, then esophagus. इसी तरीके से this is the best part type when you can just say the total synergy. टोटलिटी में एक पिक्चर दिखाई उनको, एक थीम बताई उनको, एक टॉपिक बताया उनको, and then ask them after the lesson is over, break it down into different components. Which part is responsible for making digestion easier? Obviously, all the organs, the liver, the pancreas, the kidney, they are all the organs, they make the digestion. Which part of the digestive system, the digestion starts first? In the mouth. जब हम चबाते हैं, chew करते हैं, the first digestion starts here itself. So that way, the students will come to know about analysis. इसका assessment देख लीजिए कितना बढ़िया है. Select the parts of the story that were the funniest, saddest, happiest, or unforgettable and all that. Unbelievable also. Select an action of the main character that was exactly the same as something the students would have done. बच्चे शैतानी करते हैं और हर स्टोरी लाइन में एक बच्चे को जरूर दिखाया जाता है who is very much inquisitive or trying to find out the way, trying to put up the things in the funniest way. So that way you can just compare the things, contrast two main characters, differentiate fact from opinion. Fact is sun rises in the east, but this is not the fact. The fact is sun remains on its position. It is earth which revolves and rotates around the sun to create different seasons and to convert the daylight into night and night into day. So day and night and then different seasons. The fact remains same. The opinion is different. The next one we go for is synthesis. Now synthesis is analysis ka just opposite. When we have got different components in our hands and then we put them together using the similar objects as per the parts of digestive system, create a project or model of digestive system. How would you design? How would you design anything? How would you test whether it is right or not? ये अभी जो लेटेस्ट में आगे हमारी कई वेबिनार्स होते हैं हफ्ते में 2, वहां पर हम करते हैं. एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग विच मींस फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, और एक होता है क्रिएटिव थिंकिंग विच मींस फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन टू दैट. So finding out problem is critical and creative thinking is finding out the solution to this. The solution is synthesis. So can you formulate a theory for rising of a sun? Again, the same thing comes up. A rising of sun never happens. It is basically the rotation and revolution of earth around the sun which causes day and night. But can you formulate a theory or not? Yes. Now let them start. Write down, let us say 100 words. Write down how the sun rises
and how the sun sets, how the day and night are caused, how the